energetic and enthusiastic. What happened? Is everything fine? Yeah, everything is fine, Ah, alhamdulillah. What that's about great. you? I'm fine, dear. I'm fine as well. Thanks so much. Alhamdulillah. Sir, what do you say? अरे यार मैं बोलना भूल गया क्या शी हुआ? सर क्या 1 हुआ? सेकंड कॉल आ रहा है Okay, okay. Take your call. समर, कोई डाउट तो नहीं बचे आपको? No, sir. Okay. I just had the doubt of the question I was telling you about on Thursday. Thursday with the maths question. अच्छा अच्छा, फिजिक्स क्वेश्चन. हाँ हाँ, आपने फिजिक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कुछ. तो समर, ऐसा करो ना आप बच्चे. डू वन थिंग. Yeah. Take a screenshot of that question and send it to on the official number. Okay, sir. हाँ, सो हम लोग उसको जो है मैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि समटाइम्स डिक्टेशन में कुछ लाइक इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है सुनने में. सो दैट्स व्हाई आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट लो उसका एंड शेयर इट ऑन द ऑफिशियल नंबर. ठीक है? Yes, sir. हाँ, सो मैं उसको वहां से लाइक आई विल रिसीव दैट क्वेश्चन एंड आई विल जस्ट डिस्कस इट विद यू. डोंट वरी अबाउट इट. I send it, and what should I write? इन यू सेंट इट. When I send the screenshot, what should I write? You should you just write it that share it to Amir sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, dear. How are you? Fine, sir. What about you? I'm fine, dear. Thanks so much for asking. So preparation वगैरह कैसी चल रही है करिश्मा? Yes, sir. अच्छी चल रही है. अच्छी चल रही है. That's great. That's great. चलो अच्छी बात है. That's good that preparation is going well. सर आपके एग्जाम कैसे गए? That was fine. That was good, dear. Thanks so much for asking. अभी रिसेंट में 17th को ही ओवर हुआ है. But yeah, now तो I'm कैसे गए एग्जाम exam was very good. Exams were very good. वो तो एक्सपेक्टेड है सर अच्छा, नहीं देखो लाइक टॉपर समटाइम्स. टॉपर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मेरे भी एग्जाम खराब जाते हैं. और एक एक एग्जाम गया भी लाइक नॉट दैट मच एक्सपेक्टेड. वो इतना कौन गए सा में. वाला कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, दैट वाज वेरी टफ. लाइक पेपर इतना टफ आया था, लाइक बहुत ज्यादा. सर बाय द वे व्हाट वाज योर यूनिवर्सिटीज नेम आई फॉरगॉट गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. ग्रुप Gobind Singh Indraprasth University in अच्छा Delhi. ओके Yeah. ओके ओके इट इज इन दिल्ली और आउटसाइड हाँ, दिल्ली no, it's in Delhi. It's a state university, अच्छा जी a state government university. ओके 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 Yeah. सही सही चलो. So let's wait for some time because अभी बच्चों ने ज्वाइन किया नहीं यार. 3 बच्चे आए हैं आप लोग. What happened? Just let me in check whether Hiba and all the one are अच्छा सर ये joining. नहीं समझ में आता कि लेनोवो के एक अकाउंट की तरफ से आता है कि प्लीज लाइक सेंड योर प्रेफर्ड टाइम फॉर टेस्ट 5 और फिर दूसरे अकाउंट से आता है हेलो अब्दुल्ला अशरफ दिस इज अ रिमाइंडर फॉर योर फिजिक्स क्लास विद आमिर अलवी समझ नहीं आता लाइक मे भी हो सकता है 2 नंबर्स हों जो जिनसे आपके थ्रू कांटेक्ट होता हो. हाँ नहीं नहीं मेरा एक नंबर है उन लोग के 2 नंबर है हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. वही मैं कह रहा हूँ हाँ बच्चे. Let me check who has joined. It's Shweta. Hello, Shweta. How are you, bache? Good evening, sir. I'm fine, sir. Good How are you? evening, dear. I'm fine, dear. Thank you so much for asking. How's your preparation going on? Good, sir. Tomorrow is my science commentary. Science pre-board. Yes, sir. Commentary. Oh, okay, okay. Best of luck for your exam. Let's check who is there again in the class. It's Samina. Hello, assalamu alaikum, Samina. How are you, bache? I'm audible. I'm fine, dear. Thanks so much for asking.
Okay, so 2 मिनट और वेट करते हैं बिकॉज आई थिंक वन और टू और स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो रिवीजन किया? हैव यू डन द रिविजन्स ऑल ऑफ यू? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द रिविजन बिफोर कमिंग टू द क्लास? What happened? Everybody, please let me know. किस किस ने रिवाइज किया क्लास में आने से पहले? ऑनेस्टली बताना आप लोगों ने। I didn't do. Okay, Samina didn't. What about Abdullah, Samar, Karishma, and Shweta? Same, sir. Actually, I was doing chemistry, not the physics. Mystery tough लग रही है। सर ये अच्छी नहीं लगती है। क्या चीज अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री या फिजिक्स? फिजिक्स अच्छी नहीं लगती? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो बहुत गलत बात हो गई यार, फिजिक्स में क्लास में फिजिक्स की बुराई। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। चलो कोई नहीं, थोड़ा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, पढ़ना तो यस सर, वो पड़ेगा। तो है। है ना? तो कोई बात नहीं, चलो फिर भी यार देखो देखो क्लास देखो, हमारी वीक में एक क्लास होती है। अब लाइक इन दिस वीक हम लोगों को क्या होगा, हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। Okay, so revision classes में what we'll do, we will do the like you can say short revision, like properly theory भी करेंगे उसमें, properly तो नहीं, like we will be doing the, हम लोग हर एक टॉपिक को शॉर्टली उसको एक्सप्लेन, आई विल डू एक्सप्लेनेशन एंड आप लोग डाउट्स वगैरह उसमें पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। सो दैट्स वाई अब आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिवीजन जस्ट इनिशिएट द रिवीजन प्रोसेस। अब हम लोग जब क्लास में रिवीजन करेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, जब आप रिवाइज करके आओगे देन यू विल बी एबल टू आस्क मी द डाउट्स। अदरवाइज अगर आप ये रिवीजन क्लासेस फिर वर्थ इट नहीं होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग ऑल ऑफ यू प्लीज like revise the concepts before coming to the class, whether it's maths or science or physics, chemistry, whatever is your subject, जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं। तो प्लीज रिवाइज बिकॉज ऑलमोस्ट देखो लाइक सिलेबस इज डन। हमारा नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग द ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई विल टेक ओनली 2 क्लास, इट्स नॉट दैट मच लॉन्ग चैप्टर, ठीक है। सो बेसिकली सो हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस डन है। सो अब रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, रिवीजन फेज स्टार्ट हो रहा है, एंड यू हैव 1 मंथ फॉर द बोर्ड्स। एक ही मंथ है आपका, 28 से पेपर स्टार्ट है, am I right ना? 28 से आई थिंक Yes. फर्स्ट एग्जाम है, 20th है या 18th है? सर वो हम लोग का नहीं है सर, वो कुछ अच्छा लैंग्वेजेस का है, अच्छा 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 तमिल एंड ऑल। अच्छा हाँ, आई थिंक उर्दू, हाँ मेरी सिस्टर है ना उसका उर्दू है, तो आई थिंक वो 16 या 14th 80 समथिंग 20 से पहले है वो उर्दू का पेपर अब की बार। तो हाँ, मुझे इसलिए थोड़ा जहन में था, ठीक है कोई नहीं। बट बेसिकली आपके 28 से तो स्टार्ट हो रहे हैं ना। फर्स्ट इज ऑफ कौन सा पेपर है फर्स्ट आपका? 21 को हिंदी का है सर। 21 को हिंदी का। French. अच्छा अच्छा ठीक है। लाइक मुझे सिर्फ साइंस और मैथ्स का ही आइडिया है, तो इसलिए आई डोंट नो, बट कोई बात नहीं, अब रिवीजन स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, मैथ्स का हमारा सिलेबस लाइक स्टार्ट्स, लास्ट टॉपिक बचा है मीडियन का, और फिजिक्स में हमारा ह्यूमन आई इज लेफ्ट। सो इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग द ह्यूमन आई एज वेल। सो इट्स नाउ टू लाइक इट्स अ बेस्ट टाइम टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द रिवीजन, क्लियर? अब यस सर। आप लोगों से आई विल बी एक्सपेक्टिंग सम डाउट्स बिकॉज इट्स द डाउट प्रोसेस, लाइक अब आपका डाउट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक यस है। सर। हाँ तो चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब आई थिंक कोई नहीं ज्वाइन करा, ऑलमोस्ट वी हैव वेटेड अ लॉट। सो लेट मी चेक वी हैव व्हाट वी हैव डन सो फार इन द लास्ट क्लास। So I've explained the solenoid magnetic field, the shape of solenoid and the magnetic field due to the solenoid, and what factors will affect the magnitude of the magnetic field of solenoid, right? Am I right? यस sir. So is this clear to everybody that we have covered so far in this class, in this chapter, sorry? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt बच्चों? Please let me know once. नो सर। Sure. देखो, this chapter is very theoretical, and this is the most easiest part of the chapter, because the toughest part is omitted right now. Electric motor, electric generator, okay, and some introduction of AC current was also there in the CBSE syllabus as far as I know. So that's the major topic has been omitted.
and only the easiest topic is left, which is the magnetic field due to different conductors and the force on a current carrying conductor. So these two main topics are there in the, and properties of magnetic field is not that much you can say tough or unique. It's very common. So I hope that you all got my point, what I've covered so far in the class in this chapter. Okay. So, and I've let me write down the magnetic electromagnet definition. Let me just a second. I just wanted to check what will be the kind of writing if I write with a sharper nib. Is this fine or is this fine? Please let me know everybody. कौन सा वाला ज़्यादा better लग रहा है आपको? ये थोड़ा like bold या फिर ये थोड़ा सा sleek सा? थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो, मैं उसी में लिख दूंगा फिर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा जो ना आपको भी दिक्कत होती होगी समझने में, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं आ रही बिल्कुल भी. सो Yes, इसमें स्टार्ट I करो. think sleek is better. हाँ, Yes, I sir. think sleek is better. स्लीक इज बेटर. चलो ठीक है, आज स्लीक में पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर स्लीक से और कंपेयर करेंगे. ठीक है. सो चलो लेट्स स्टार्ट. So what is electromagnet? So electromagnet is a temporary magnet, you can say. Yes or no? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Electromagnet थोड़ी सी स्क्रीन वॉबल करेगी एक्चुअली. लैपटॉप लाइक माय राइटिंग पैड एंड द लैपटॉप इज ऑन द सेम टेबल, सो just ignore that part dear. Okay, so that's why a little bit laptop is wobbling on the table. An electromagnet is a temporary magnet formed or you can say created by the flow of current. ठीक है. I think यही सही है. Sleek one is much better than the bolder one. बताओ. Yes. Yes, sir. ठीक है. Yes. चलो ठीक है. I know, So right? yes Abdullah, you're saying something? Nothing, nothing. वही आपने बोला ना कि क्या बोलते हैं, sleek one is way better. So ऐसे like बहुत अच्छी है actually compared to that one. हाँ, उसमें जो ना बेसिकली क्या ना, निब की वजह से जो ना लाइक वो बोल्ड होता था ना, तो एक्स्ट्रा कुछ लगता था कि सर एक जैसे. डाउट था मुझे, हाँ हाँ बताओ. सर टॉपर्स की तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी रहती है. बस कुछ ही यार. ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं. जितने जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपर के आंसर उठा के देख लीजिए, हाँ. वैसे ही अच्छी रहती है. हाँ, like that's why they get the full marks, because they know the art of writing the solution. And that's what I'm, जैसे देखो जो चीज what देखो, जहां तक मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस से खुद से लिखा है, वही चीज मैं आपके अंदर भी इम्पार्ट करना चाहता हूँ, जस्ट कि आपको जो स्किल है, राइटिंग स्किल, दैट ऑल्सो गेट्स डेवलप्ड. ठीक है. सो इसी वजह से देखो, जब आप मेरे नोट्स देखोगे, हमेशा मैं कभी कोई पैराग्राफ नहीं लिखता हूँ. पैराग्राफ नहीं लिखने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है, आप कुछ भी लिख दो पैराग्राफ में, टीचर विल नॉट लाइक लाइक सही से लाइक इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते, लाइक जो इवैल्यूएटर्स होते हैं. अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखा द वे आई हैव रिटन, टीचर को पता लग जाएगा कि इस बच्चे को पता है कहाँ. और बुलेट पॉइंट से क्या होता है, आपको टीचर को पता होता है कि हाँ बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है, एंड उसने जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं, क्रिस्प मतलब कि जो मेजर पॉइंट्स है, जिनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है, वही लिखा है. आप कुछ भी फालतू वालतू लिख के आ जाओ, वो सब चल सकता है, इंग्लिश में चल सकता है, थोड़ा सा हिंदी में चल सकता है, बट साइंस में, सोशल साइंस में नहीं चल सकता. सोशल साइंस में आप लोग पैरा मत लिखो, 5 पॉइंट्स लिख दो, ये 6 5 और 6 पॉइंट्स यू कैन राइट इन द 5 मार्कर, एंड डेफिनेटली यू विल गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ 5.
if you have written the like sufficient information, and if you have written the like point to point information, you will get definitely 5 marks. That's what I have learned, and still I am you can say I'm implementing in my exams as well. I'm like, I never write the answers in the big paras. I always write the answer in the points. That's ये चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, इसलिए हमेशा बिग पैरा से अच्छा है उन बिग पैरास को जस्ट इन ब्रेक देम इनटू सब्सिक्वेंट पॉइंट्स। ठीक है, ओके सर। ये देखो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब लाइक जो विच कैन बी देयर इन द स्कूल एग्जाम्स में एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ। ये जस्ट आपको समझने के लिए कि कैसे हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्रोड्यूस्ड। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट सो हमेशा आप लोग whenever you write an exam, always prefer to write the write the answer in points. If the question is of 5 markers, if the question is of 3 markers even, ठीक है, so that because teacher doesn't have enough time to write like read out the whole para, they don't have enough that much time, they just read out the para, so इतने इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पॉइंट्स से लिखेंगे उनकी अटेंशन आएगी, एंड दे विल लाइक आपको मार्क करने के उनको मार्क करने के लिए ज्यादा आसानी होगी। अब जब ज्यादा आसानी होती तो वो इतना टाइम नहीं लगाते, वो अच्छी मार्किंग होती है उस पेपर में फिर आपके लिए। तो इसलिए ऑलवेज प्रेफर टू राइट द आंसर इन द bullet points coil of insulated copper. Wrapped around a soft iron core. That is magnetized. आपने बोर्ड्स के पेपर में देखा होगा, जो आपने टॉपर्स के पीवाईक्यूज जो आते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें देखा होगा आपने पॉइंट्स में ही होंगे आंसर सबके ज्यादातर। किसी ने नोटिस किया है ये चीज? Yes, sir. देखा Yes. आपने? हैव यू नोटिस दैट थिंग? Yes, sir. पॉइंट्स में ही होंगे हमेशा ज्यादातर मैक्सिमम आंसर्स जो मैंने, क्योंकि व्हेन आई वाज इन 12th मैंने ये चीज देखी थी, तो मुझे भी काफी हेल्प मिली इस चीज से। 10th क्लास में इतनी नॉलेज नहीं थी कैसे क्या करना है, तो 10th क्लास में लाइक समहाउ आई स्कोर्ड जितना भी हो सका, बट व्हेन आई लाइक इन द 12th क्लास मैंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली, एंड उसकी वजह से काफी हेल्प हुई, और ईज थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है ना वे ऑफ राइटिंग का, वो थोड़ा ईज हो गया था। एंड वन मोर थिंग, कभी भी सिर्फ नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहो। Never depend on the notes only. All after notes, try to read out the books to get the you can say or detailed information. देखो नोट्स क्या होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन होती है, जो कंक्लूजन होता है, समरी होता है। अगर आपको समरी समझ में आ गई, देन यू कैन गो थ्रू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। कभी कभार थोड़ा सा उससे जो ना आपको आइडिया होता है एग्जाम्पल्स देने के लिए। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल्स होते हैं, बट जो आप रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स यूज करोगे इन द पेपर, समटाइम्स एग्जाम्पल्स भी लिखे आने होते हैं ना, लाइक एक्सप्लेन दिस थिंग विद एग्जाम्पल, सो वो चीज आपको बुक से मिलती है। ठीक है, ऑलवेज after the notes, always prefer to read the NCERT or with whatever book you want to refer. Like I've shared the book S. Chand book. That's a very good book. You can also prefer that book. Even if you are not satisfied with that book, you can go through, like you can go with the NCERT. So that's what I would say. Okay. So just don't limit yourselves to the notes. So is that clear to everybody? Please let me know. That's what the electromagnet is. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. so I'm just writing the factors affecting the electromagnet. Then we'll be starting the force on a current carrying conductor, because I just don't want to take any risk, because maybe आपके क्वेश्चन आ जाए like what is electromagnet, right? The factors affecting electromagnet. So that's why. So yeah. So next point is, so initiate your revision process and take the model papers and try to solve them.
जितना आता है एटलीस्ट उतना सॉल्व करना स्टार्ट करो आप, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट करो, मैथ्स का पेपर देखो आप। सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक डू योर रिविजन टू बूस्ट अप योर मार्क्स. The number of turns in a coil. And I've told you that solenoid is a kind of electromagnet. If you increase the number of coils, the magnitude of the magnetic field generated will get increased. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And one more thing, I'm not saying that this is the only strategy that I have been sharing you. Like there are many strategies and they also get the good marks. Just I'm telling you the strategy that I have implemented in my life. Okay, so just don't think that it's the only strategy. I'm just giving you the guidance so that your process gets easy. Okay, so that's what the current flowing in the coil. Okay, so current flowing in the coil is one of the factor. The length of air gaps, like it also between its poles. Clear, everybody? So these are the factors affecting the electromagnet. Please let me know, anybody, any Sir, the like length. The length the length of air gap between the poles. of Yeah, like just suppose this is a magnet, so this length. So the more the length between them, the lesser will be the like magnetic field. Okay, I hope it's clear to everybody. Please let me know. Any doubt, anybody, please let me know, dear. no, sir. चलो ठीक है, जल्दी से write it down in your notebooks. Just I also wanted to write one more thing here. So basically, in human body, there is also some magnetics. Okay, some magnetic field is also there in the human body, and majorly two main parts of human body generates magnetic field. First is brain, second is heart. So these two organs basically produce magnetic field in our body. Clear, everybody? Because they have electrical signals in there. You can say as their fundamentals components. तो बेसिकली इन ह्यूमन ब्रेन यू हैव आल्सो लाइक जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल पल्सेस magnetic field is generated in heart as well. Some electrical pulses are there. ठीक है? Yes, sir. Yeah, so basically these are the two. So यहाँ पे हो सकता ये this can be like आपका one marker में आ सकता है कि name the, you can say name the organ, human organ that produces magnetic field. So आपको पता होना चाहिए. So these two organs are there. आपने MRI, have you heard the name MRI, magnetic resonance image? Yes. So magnetic resonance image is like just basically you have like specifically for brain, because brain, you can say brain basically produces magnetic field. Clear? Clear, everybody? Yes, sir. Yeah, MRI, yeah. So the two main organs. So these are the small information that on like on which the questions can be formed, like MCQ question or a one marker question of the human body. Where the
फील प्रोड्यूस्ड। देखो हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है, किसी को करंट महसूस होता है बॉडी में? हो रहे हो रहे। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये करंट खास तौर पे जब ज्यादा महसूस होता है जब एग्जाम्स बहुत पास होते हैं। हाँ जी, जोर का झटका जोर से लगता है। जोर से लगता है। चाहे कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, ये झटका लगता ही लगता है अच्छा अच्छा से। चलो कोई नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। क्लियर है? Yes or no, everybody? यस So, like Sir. this one is like much better than this one. ये वाली ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है। यस Yes, सर। Yes. sir. चलो चलो ठीक है, Yes, चलो। sir. चलो यार, अच्छा हुआ आज मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, आप लोगों ने भी बताया नहीं कभी, ये इतनी रीडेबल नहीं थी यस आपके लिए। सर। चलो कोई नहीं। क्लियर है ये? लाइक ये हैव यू रिटन इट डाउन? Yes, डन? sir. सर Yes, sir. एक चलो लाइन ऊपर कर दिए। चलो चलो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ बस थोड़ा सा नीचे। नहीं नहीं नहीं, हाँ नीचे नीचे नीचे। सर ऊपर कर रहे हैं आप, नीचे कह रहा हूँ मैं। हाँ, बस एक लाइन और। बस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन। अच्छा हाँ, अच्छा। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो फिर अब्दुल्ला, अभी बच्चे ये तो अच्छा खासा है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है? सो स्टार्ट रिवाइजिंग, ठीक है? सो आई थिंक हाँ यस, टुडे वी हैव वन फिजिक्स क्लास। ओके। Samarbeer, this is the 38th question that you want to discuss with me. Which question? Sir, 38 Jagadish has a field which is in the shape of Yes, right sir. angle. चलो ठीक है, इसको फिर डिस्कस करेंगे, अभी फिजिक्स ये क्लास है ना, अगर टाइम रहा ना इसके भी एंड में, सो विल डिस्कस इट, डोंट वरी। एल्स फिर हम लोग फिर फिजिक्स मैथ्स की क्लास तो होगी हमारी कल, सो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, अगर आज टाइम नहीं मिला तो, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। Okay, sir. हाँ, अब मुझे क्वेश्चन मिल गया, कोई मसला नहीं है, दैट्स इनफ। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट्स ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज द फैक्टर्स, सॉरी, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? सो बेसिकली, so let's understand. So if some current is flowing through a conductor, I'm just telling you right now orally. So suppose that a current is flowing through a conductor, straight wire is there, okay? And a current is flowing through that wire. So basically some force will be exerted on that wire due to the magnetic field generated by that electric current. Clear everybody? Yes or no? Sir, can you repeat? अच्छा अच्छा ठीक है, आई एम सेइंग दैट whenever suppose that a wire is having some electric current in it, ठीक है? So if you place that wire beside, you can say if you have a magnet as well and you have a electric current wire as well. Let me just a second, let मैं एक figure ले लेता हूँ, उससे थोड़ा explain करना ज़्यादा आसान होगा instead of just directly speaking it out. Just give me a second. हम्म ये टॉपिक आपका 12th क्लास में भी आएगा, दोज विल टेक द साइंस। ये टॉपिक आपका डिटेल्ड में आएगा 12th क्लास में, मैग्नेटिक्स चैप्टर में। इस पे एक न्यूमेरिक, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स।
force is equals to mu I d1 into d2 upon sorry d1 into d2 I1 I2 divided by d. थोड़ा सा फॉर्मूला लाइक आप रिवाइज किए हुए काफी टाइम हो गया, बट हाँ यही होता है फॉर्मूला. ठीक है देखो. So this is the figure. Okay, if suppose that a magnet is there and this is the wire. देखो ये मैग्नेट रखी हुई है आपकी, ठीक है, and a wire is there which is hanged, or you can say flexible joint है, ठीक है, so that it can move properly. So basically if the current is passed through that wire, देखो circuit यहाँ पे close है. Clear? Yes or no everybody? This circuit is closed. It means that the current is flowing through the circuit. Yes or no? Yes, sir. हाँ. So basically whenever the current will flow, you can see that thing AB is the length of the wire, but whenever the current flows, now the wire is basically kicks out, like basically straight से वो थोड़ी सी it will just deviate from its own, you can say, original position because of the magnetic force exerted by this magnet on a current carrying conductor. Clear everybody? Magnet exerts magnetic force on a current carrying conductor in a perpendicular direction. ठीक है? And this to find out the force, magnetic force, we use Fleming's left hand rule. Okay? Fleming's left hand rule is applicable in this, you can say, topic. You can see this thing, a wire is straight, AB है, current यहाँ पे flow नहीं हो रहा at this point of time. Suppose current नहीं flow हो रहा, but when I switched basically close the circuit, अब जो wire है वो यहाँ पे flexible है, so it can move in any of the direction, but due to the magnetic force, it has moved from its position in this direction. Clear? Yes or no everybody? Current is in this direction, magnetic field is in this direction, and force is in this direction. Yes or no? So you can see Yes, this sir. thing, this magnetic force, because देखो magnetic force कहाँ से जा रही है, नॉर्थ से लेके साउथ में जाएगी. Magnetic field will be in the north to south direction. Yes or no? Current in which direction? Current in the downward direction. And you can see this thing, wire जो है ये बाहर की तरफ आ रही है ना, to outwards. Yes or no? Like this. So this is a 3D phenomena, you can say. Y-axis, x-axis, or z-axis. Z-axis, suppose that thing, two axis, x and y-axis plane. तो आपने you have already studied that this is x-axis and this is y-axis. There is one more axis, that is z-axis, which is coming out of the screen. Just suppose that if I'm sitting in front of the screen, so one x-axis is coming out of the screen towards my face. That will be considered as the z-axis, and one axis is going in this direction, y-axis in this direction, and z-axis is towards me. So there are three. So like this. Clear everybody? That's why you can say like this. This is finger is towards you, upwards, in the rightward. Y-axis, x-axis, and z-axis. All the three are perpendicular to each other. Yes or no, everybody? X and Y perpendicular 90 degree. यहाँ पे देखो, ये see this thing. ऐसे हाँ, ये चीज 90 degree है. Yes or no? बोलो. Yes, sir. Clear to everybody how the magnetic force is working on the current carrying conductor? Samina, Abdullah, Karishma, Samar, and Shweta. Yes. ठीक है. Yes, sir. What about rest of you? Is this clear? Yes, sir. Any doubt? Any doubt बच्चों? Sure कोई doubt नहीं है? No, sir. चलो ठीक है. So this is the way to demonstrate the force on a current carrying conductor. ठीक है? Whenever you place a current carrying conductor in like in a magnetic field, some magnetic force will be exerted on that current carrying conductor. Clear? What happened? Why is everybody silent? Yes, sir. चलो ठीक है. So let's do.
Okay, so let me write down some points. Okay. Current carrying conductor is placed field mechanical force is exerted on the current on the conductor to make it move. Yeah, sorry. Let's write down the points for this current carrying conductor. Okay, so basically the direction of the magnetic field and the force acting on the current carrying conductor, all the three are perpendicular to each other. Clear, everybody? The direction of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field magnetic field is first is perpendicular perpendicular to the direction of current. Okay. Next is perpendicular to the direction of magnetic field, or you can say perpendicular to the magnetic field. Clear, everybody? Yes. Direction of the magnetic field. I hope it's clear to you, everybody. So ये इस टाइप से होता है, देखो z एक्सिस और y एक्सिस कैसे, देखो इसको मैं like something like this. So तो ये आपका होता है x axis, this part is x axis, this is the y axis. Okay, this dotted line is coming outwards the screen, either outwards or inwards, so it depends on the situation.
So this is the Z axis. Clear, everybody? These three axes are there, which is in which this you can say force on a current carrying conductor is depicted. Clear? Yes, sir. चलो ठीक है, that's great. So suppose that अगर आप like you can यहाँ पे आप force को mention कर सकते हो directly यहीं पे. So suppose this is your magnetic field. Yes, everybody. Sorry for the interruption. So this is, yeah. So suppose this is the current. Clear? This is the y-axis is current. Okay. So this is current, and this is the magnetic field. And this is the force. Direction of force or force itself. Okay. Clear, everybody? Yes or no? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Please let me know. Okay, so let's Sir, write down. Yeah. So let's implement. हाँ, करिश्मा, you are saying something? आप इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा ठीक है देखो. What happened? देखो क्या होता है. आप whenever you place a current carrying conductor in a magnetic field, some magnetic force is exerted on that wire, on that current carrying wire. Okay. So basically, now you have to find out the direction of that magnetic field force, or it's up. Okay, sometimes आपको current की direction given होगी, magnetic field given होगी, आपको force निकालना है, force given है, magnetic field given है, current निकालना है. So that's why. Okay, so basically what happened is that देखो north to south रहती magnetic field आपकी. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. So and the current is in the downward direction. यहाँ mention है arrow से, black वाला arrow है. Okay. So basically you can see this thing, due to the magnetic force, this wire was completely still when there was no current. But when the current is there in the wire, it basically displaced from its original position outwards. देखो outwards हो रहे हैं ना, देखो ये outwards जा रहा है, ये देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ पे आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आउटवर्ड्स जा रहा है. Yes, sir. जैसे आप देखा होगा ना, आपने स्विंग, आप ये समझ लो जस्ट दिस इज अ काइंड ऑफ स्विंग, झूला है जो ऐसे. तो ये Okay. ऐसे 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 सब आप अज्यूम करो कि अभी जो मैग्नेटिक वायर वो ऐसे है. अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये अब आउटवर्ड्स जाने की जगह ये बाहर जाएगा, सॉरी अंदर जाएगा, इनवर्ड्स जाएगा ये. सो अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कैसे वो होती है. कि अगर आप या तो अगर आपको रिवर्स करना है ना, तो आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, आपकी जो फोर्स होती है वो रिवर्स हो जाएगी आपकी. सो विल डिस्कस इट लेटर, बट राइट नाउ इज दिस क्लियर करिश्मा डियर? Yes, sir. चलो ठीक है. So and I have written it down. Direction of force on a current carrying conductor in the magnetic field is perpendicular to the direction of current and perpendicular to the direction of magnetic field. So all the three quantities are perpendicular to each other. So you can say present it like this way. Clear? Okay, sir. Any Thank doubt? No, sir. Sure. Yes, sir. चलो ठीक है. That's great. So let's yeah. Okay. And one more thing is there. Let me write it down. Yeah. So whenever the maximum force is exerted when the direction of basically if the current is perpendicular to the magnetic field ना, देखो अगर आपका जो current carrying wire है is perpendicular to the magnetic field, the maximum force will be exerted on the wire. यानी कि जो आपकी force होगी ना, that will be maximum if current and magnetic field are perpendicular to each other. Yes or no? तो ये this is the case in which the maximum force is exerted. Clear? Yes, sir. ठीक है. So I'm writing this, the maximum
maximum force exerted the current carrying wire only when it is Can you scroll up? yes, it's visible now. No, sir. Up. Up, in this way. Yeah. Okay. Yes. Done. Yes. Okay, ठीक है. When it is perpendicular to the direction of magnetic field. So this can be a question in your boards of one marker, like if like in which direction, in which case the force is maximum. Okay. So yeah, next is no force will be there if current carrying conductor, or you can say current and magnetic field are parallel to each other. Suppose कि आपका current carrying wire is not perpendicular, instead it is parallel to magnetic field. So no force will be there. Clear, everybody? Yes or no? Yes. So these two factors, or you can say case, are there. So always remember this. No four acts on carrying conductor when it is parallel to magnetic field. So this is all about this topic. ठीक है. और हाँ, मैं लिख देता हूँ कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर आपको रिवर्स करनी है, सो यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर आप फोर्स आपकी आउटवर्ड्स जा रही है, अगर आप लाइक ठीक है, और आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे इन अ पर्टिकुलर केस, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन, ठीक है, राइट नाउ, बिकॉज डायरेक्शन जो फोर्स है आपकी डिपेंड्स ऑन दी ऑल अदर फैक्टर्स. सो हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे अभी. सो अगर आप फोर्स के लिए, अगर आपको फोर्स रिवर्स करनी है, अगर फोर्स आपकी राइट वर्ड्स जा रही है, अगर आपको लेफ्ट वर्ड्स करनी है, तो आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो. क्लियर है? Yes or no? Everybody? Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah. So let me write these points as well. So this topic is almost done. Only one or two numericals are there. And next class now, this is a kind of, you can say this is a task for you. So go like in the next class, before coming to the class, you have to read the NCERT book or SCHAN book of like आपको जो टॉपिक वो है डोमेस्टिक सर्किट्स का जो टॉपिक है छोटा सा, आपको एनसीईआरटी या फिर एसचान जो बुक मैंने शेयर की है उससे आपको रीड आउट कर लेना. ठीक है. सो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर. ठीक है. तो आप प्लीज ये जरूर करना है आप सबने. ठीक है, बिफोर कमिंग टू द क्लास, दिस इज अ टास्क फॉर यू. ठीक है. Yes, sir. या सो द डायरेक्शन ऑफ, सो इस टॉपिक, ये टॉपिक इज ऑलमोस्ट डन. ठीक है. करंट कैरिंग कंडक्टर
magnetic field can be reversed by reversing the direction of current. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप यहाँ करंट को अगर रिवर्स कर दोगे तब भी आपकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो रिवर्स हो जाएगी. इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब भी आपकी फोर्स रिवर्स हो जाएगी. ठीक है. सो दोनों में से अगर आप कोई भी चीज रिवर्स कर देते हो तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट विल आल्सो गेट रिवर्स्ड. डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंडक्टर field can also be reversed by reversing the direction of magnetic field. Direction of magnetic Here, everybody, please let me know. Yes or no? Yes. Any doubt? No, sir. Okay. Okay, so basically, so इसी form phenomena पे your Fleming's left hand rule is based. ठीक है. So Fleming left hand rule मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. So अभी statement ही हो पाएगी, like only statement is there. जो आपको मैंने टॉपिक बताया वो 15 मिनट्स का टॉपिक है. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन. सो नेक्स्ट क्लास में जो है मुश्किल से 15 या 20 मिनट्स का वो टॉपिक है. उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, डेफिनेशंस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज फ्यूज. सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा वहाँ पे टाइम 10 to 15 मिनट्स कम हो जाएगा इफ यू रीड आउट दैट पोर्शन बिफोर कमिंग टू द क्लास, एंड विल स्टार्ट द ह्यूमन आई चैप्टर. ठीक है. सो जस्ट आपको रीड आउट करना था कि आपको थोड़ा सा उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस टॉपिक का. ठीक है. जस्ट गेट द प्रॉपर लाइक एटलीस्ट आपको शॉर्ट सर्किट, फ्यूज, ओवरलोडिंग, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, इनकी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए. सो एंड इन द क्लास विल बी लाइक डूइंग दैट थिंग इन डिटेल मैनर. ठीक है. सो Fleming left hand rule says this thing: hold the forefinger. Forefinger means index finger. The center, middle finger or center finger, and thumb. Okay, of your left hand and
at right angles to one another to one another. Adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of thumb, the direction of magnetic field. जो आपकी फोर फिंगर है डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी मिडिल फिंगर है डिपिक्ट्स द डायरेक्शन, एंड द मिडिल फिंगर पॉइंट्स, मिडिल फिंगर भी क्या पॉइंट करेगी? पॉइंट्स दी, Current. यस, डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड योर थंब I think force. क्या? Force. Yeah, Force. force, yeah. Then the direction of which thumb points, ठीक है, gives the direction of force acting on a conductor. Clear, everybody? Please let me know. देखो, this is called Fleming's left hand rule. Clear? So Yes, इसकी sir. मैं पिक्चर, Yes, sir. इसकी मैं बेसिकली एक पिक्चर है वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉ करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हैंड है. So this is the presentation of Fleming's left hand rule. How many of you got my point? Please let me know. Okay, Shweta, very good. What about Samar, Abdullah, Karishma, and Samina? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Clear? sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है. Nice. सो ओके, चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट. सो इस टॉपिक में यही था, सिर्फ 2 और 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे आपके. एंड डोमेस्टिक सर्किट को मैंने आपसे कहा है कि प्लीज रीड आउट दैट डोमेस्टिक सर्किट, किसी भी बुक से आप पढ़ लेना जिसमें आप कंफर्टेबल हो. एंड we'll be doing that in the next class. 15 to 20 minutes का हार्डली टॉपिक है. एंड देन इंशाल्लाह विल बी डूइंग द ह्यूमन आई. ठीक है, ह्यूमन आई हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में. फंक्शन ऑफ आई विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक. हमारी फंक्शंस क्या होते हैं आई के कंपोनेंट्स के, जैसे कि रेटिना, लेंस, एंड विस लाइक एक्वस ह्यूमर. ठीक है, एंड आपके क्या कहते हैं, लेंस हो गया, आपकी कॉर्निया हो गया, एंड योर प्यूपिल, आइरिस, एंड दीज द थिंग. सो हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मार्कर्स का आता है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई. सो ये 5 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है आपका. सो हम लोग फर्स्ट टॉपिक ये कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सर इतनी स्मूथली तो होता नहीं है. इतनी स्मूथली होगा, डोंट वरी. हाँ, बीच में छोटा सा एक टॉपिक है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट. उसमें सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ नहीं है. वो मुश्किल से 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में कवर अप हो जाएगा. उसमें इतना कुछ लंबा चौड़ा नहीं है.